Hello bachcho, let's see this question. And the question says that directions are given for the question is in the following questions, an assertion A is followed by a corresponding reason R. Use the following keys to choose the appropriate answer. So assertion A is given 1 butanone reaction with HBr in the presence of peroxide produces 1 bromobutane, and reason for this is mentioned as is it involves the formation of primary radical. तो हमारे पास ऑप्शन ए गिवन है इसका. Both A and R are correct. R is the correct explanation of A. B, both A and R are correct. R is not the correct explanation of A. C, A is correct, R is incorrect, and D, A is incorrect and R is correct. So the key concept of the question is anti-Markovnikov's addition. Anti-Markovnikov's so usually अभी हमारे पास एसर्शन में गिवन है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में हमारा रिएक्शन हो रहा है. H2O2 डिनोट हाइड्रोजन peroxide. So hydrogen peroxide means this denotes the reaction will be according to anti-Markovnikov's addition. So anti-Markovnikov's rule states that that hydrogen atom get added to carbon with less number of hydrogen atom. So हमारे पास रिएक्शन में भी गिवन है जो हमारे पास assertion है 1 butene on reaction with HBr in the presence of peroxide gives 1 bromobutane. तो ये जस्टिफाई करते हैं हम. 1 butene means ब्यूटीन का सिंपल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है CH3CH2CH डबल बॉन्ड CH2. इसको हम जब HBr के साथ रिएक्ट कराते हैं तो प्रोडक्ट फॉर्म विल बी, तो हाइड्रोजन विल गेट एडेड टू कार्बन विद लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम. तो CH2 अभी यहाँ पे हमारे पास CH and CH, तो हाइड्रोजन विल गेट एडेड टू कार्बन विद लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम. तो यहाँ पे हमारे पास CH2 है, यहाँ पे CH है, तो इट विल गेट एडेड टू दिस CH पार्ट. It will get CH2 and it will become CH2 and Br will be added here. So this is carbon number 1, this is carbon second, this is carbon 3, carbon 4. तो नेमिंग होगी 4 ब्रोमो. तो कार्बन, तो जो हमारा ब्रोमीन ऐड हुआ तो 1 ब्रोमो ब्यूटेन हमारा फॉर्म हुआ. 1 bromo butane is formed through this reaction in the presence of
H2O2। सो हमारा रीजन जो यहाँ पे मेंशन्ड है, हमने ये वी कैन सी क्लियरली दैट जो हमारा 1 ब्रोमोब्यूटेन बन रहा है, तो हमारा जो assertion है इट इज करेक्ट, एंड द रीजन गिवन हियर इज it involves formation of primary radical. So this thing, ये चीज हमें ध्यान रखनी होगी कि जो हमारे पास ये जो रिएक्शन हो रही है एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन, this is a reaction which involves formation of secondary radical. So our assertion is reason is wrong. So the correct option is, so the correct option is option C. I hope you all understood well. Thank you.